Hello students, good morning. Myself Sri K.D. Borse sir, biology subject teacher. Today we are going to learn 11 science biology syllabus contain chapter number 2 systematics of living organism. In that chapter contain concepts like nomenclature, binomial system of nomenclature, rules of binomial nomenclature system. These three topics detail discussed in today's lecture. So let us start today's first concept, nomenclature. The art of giving name to organism called as nomenclature. What is nomenclature? The art of giving name to organism called as nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम देने की सिस्टम होती है उसको बोल सकते हैं नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर हैज़ टू मेन पर्पस, मीन्स ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है उसके दो मेन पर्पस होते हैं. नंबर वन, टू कम्युनिकेशन एंड टू इंडिकेट रिलेशनशिप. किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम से बोला जाता है और ऑर्गेनिज्म को नाम इसीलिए भी दिया जाता है जो इंडिकेट रिलेशनशिप के लिए नाम जरूरी होता है. सो टू कम्युनिकेशन, टू इंडिकेट रिलेशनशिप, दिस टू मेन पर्पस फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. What are the two main purpose of nomenclature? To communication and to indicate relationship. All organisms are known by a particular name. जो known organism on the earth हम देखते सबको एक नाम होता है और उसको बोलते particular name. So all organisms are known by a particular name. Two types of name given to organism. First one is vernacular name or local name or common name. Second, scientific name. Two types of name given to organism, vernacular or local or common, and second, scientific name. We learn these two types of name in details. First one is vernacular name, also called as local name, also called as common name. What is vernacular name? Vernacular name means name given to organism in a particular region or area. Such name called as vernacular name or common name or local. अलग अलग एरिया और रीजन में ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई होते और वो जो नेम होता है उसको हम बोल सकते हैं वर्नेकुलर नेम. नेम गिवन टू ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर रीजन और एरिया, सच नेम कॉल्ड एज वर्नेकुलर नेम. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव large number of common names. Example, mango is one of the plant. Its scientific name known as Mangifera indica is known by over 50 different name in Sanskrit language. संस्कृत लैंग्वेज में मैंगो प्लांट को डिफरेंट 50 नाम से बोला जाता है. सो one organism have different names. Here noted 50 different names in Sanskrit language. These names are called as vernacular. Second example, Pansy, Viola tricolor. This plant means Pansy plant. Its scientific name known as Viola tricolor, grown in most
European and American gardens. This plant has about 50 common English names. Means particular region or particular area organism identify different names, so called them vernacular name or common name. Here noted two example: mango, different area, different region, different names. Pansy is also one of the plant. Different names means total 50 common names. These names are called as vernacular name. In India, almost all useful plants have local names. इंडिया में जो यूजफुल प्लांट है, एग्जाम्पल मेडिसिनल प्लांट, हैव लोकल नेम्स विच डिफरेंट और डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. इंडिया में जितने ही अलग अलग स्टेट है, जो यूजफुल प्लांट है और मेडिसिनल प्लांट है, अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं. सो कॉल्ड देम वर्नैकुलर नेम. Why vernacular name create confusion? Because the name which is different from different area or region by language, so called vernacular name, and such name is create confusion. अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, so called vernacular name, and such name is create confusion. Up to this we learn vernacular or local or common name given to organism in particular region or area called as vernacular name, and this name is create confusion because name different from different area or region by language. Now we learn second name known as scientific name. What is scientific name? Name given to organism based on some criteria and principle accepted all over the world. Such name called as scientific name. What is scientific name? Name given to organism based on some criteria and principle accepted such name all over the world. Such name called as scientific name. साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल. जो नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होता है, एंड सच टाइप ऑफ नेम कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम. साइंटिस्ट हैव गिवन साइंटिफिक नेम्स टू ऑल द known organisms. All known organisms, scientific name given to scientist. Main purpose of scientific name. Scientific name क्यों दिया जाता है? What is the main purpose of scientific name? To overcome confusion or difficulties arise by common names. कॉमन नेम, वर्नैकुलर नेम से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, वो ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है. सो फर्स्ट मेन पर्पस टू ओवरकम कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी राइज बाय कॉमन नेम, एंड सेकेंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. सो दिस टू पर्पस scientific name given to organism. Carl Linnaeus used binomial system of nomenclature.
He introduced this system in his book known as Species Planctrum, published in 1753. Binomial system nomenclature, term used by Carl Linnaeus, and such term introduced in his book known as Species Planctrum. Before 2011, set up to confirm scientific name was ICBN, means International Code of Botanical Nomenclature. ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, ये ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म करके सेटअप करने का काम, मीन्स साइंटिफिक नेम कंफर्म करना और सेटअप करने का काम बिफोर 2011 तक ICBN ऑर्गेनाइजेशन करती थी, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर नाम से जानी जाती है. ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर 2011 साइंटिफिक नेम कंफर्म और सेटअप was ICBN. Recently, IBC, International Botanical Congress, ICB, was held in Shenzhen, China in July 2017. ICB, International Botanical Congress, was held in Shenzhen, China, July 2017. This code also called as Shenzhen Code because it held in Shenzhen, China, so called them Shenzhen Code. So that old code ICBN means International Code of Botanical Nomenclature has been changed to ICNAFP. ICNAFP means International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. Always remember, before 2011 ICBN confirm or set up scientific name. Recently ICNAFP confirm or set up scientific name. Such ICNAFP means International Code for Nomenclature, Algae, Fungi and Plants. So this International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants are set up and confirm scientific name. This code was published on 26th June 2018. Name sunflower is Helianthus anus. Sunflower is one of the plant, you know. Such sunflower plant scientific name known as Helianthus anus. First word Helianthus indicate name of genus, generic name, and second word anus is denoted name species, means this binomial system of nomenclature contain two words, one genus or generic name here noted. Helianthus is a genus or generic name, and second name
second word. Anus means a species name. Up to this we learn organism given to two types of name, vernacular name and scientific name. We detail discuss here. Rules of binomial nomenclature system. First rule, name of organism is composed of two words. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो टू वर्ड्स का होता है. नंबर वन, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, also called as generic name. Generic name is simple noun. This is also one of the rule. Generic name is simple noun. Generic name begins with capital letter. कोई भी जीनस नेम जो लिखा जाता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. सो जेनेरिक नेम बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. सेकेंड वर्ड स्पेसीज और स्पेसिफिक नेम. स्पेसिफिक नेम इज डिस्क्रिप्टिव, also adjective. Here genus name is simple noun, specific name or species name is descriptive or adjective. Specific name begins with small letter. This is the difference between genus name and species name. Always remember, genus name begins with capital letter and species name begins with small letter. Rule number 8, scientific name must be underlined separately in handwritten. जब हम साइंटिफिक नेम हैंड रिटन से राइटिंग करते तब उसको सेपरेटली अंडरलाइन करनी पड़ती है. जैसे जीनस को सेपरेट अंडरलाइन, स्पेसीज को भी सेपरेट अंडरलाइन. एग्जाम्पल नेम ऑफ सनफ्लावर, हेलियांथस एनस. हियर नोटेड, हेलियांथस सेपरेट अंडरलाइन, एनस also separate underline. Scientific name must be printed in italic. जब हम प्रिंट करते तो साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक होना चाहिए. एग्जाम्पल हियर, हेलियांथस एनस इटैलिक. रूल नंबर 10, द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 letters. कोई भी जेनेरिक नेम should not have less than 3 letters. Also more than 13 letters. कोई भी generic name less than 3 letters and more than 13 letters should not have. Always remember, this is also a rule. Generic and specific or species name should not have less than 3 letters and more than 13 letters. Example, you know, aloe vera, aloe 4 letters, so not less than 3 letters. Vera is also 4 letters, more than 13 letters. Rule number 11, name of the author who name a plant or animal. जो ऑथर प्लांट या एनिमल को नेमिंग करता है, साइंटिफिक नेमिंग, इज ऑल्सो रिटन इन फुल और एब्रीवेटेड आफ्टर साइंटिफिक नेम. मीन्स साइंटिफिक नेम के बाद जो ऑथर ने प्लांट या एनिमल को नेमिंग किया है, साइंटिफिक नेमिंग किया है, उसका फुल नेम
और एब्रीवेटेड नेम आफ्टर साइंटिफिक नेम लिखा जाता है. एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, अ नेम ऑफ मैंगो प्लांट. साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पेसीज. सो साइंटिफिक नेम के बाद जो ऑथर ने नेमिंग किया है उसका फुल एब्रीवेटेड नेम लिखा जाता है. हियर एल मीन्स, एल स्टैंड फॉर लिनाइयस. सो मैंगीफेरा इंडिका, एल मीन्स लिनाइयस साइंटिस्ट, नेम गिवन टू mango plant Mangifera indica. Here noted all different 11 rules of binomial nomenclature system. Up to this, here today's topic completed. A review today's topic. We detail discuss today's topic nomenclature, binomial system of nomenclature, rules of binomial nomenclature system. On the basis of today's lecture, some exercise question noted here, short answer questions. Number 1, what are the two main purposes for nomenclature? Yes, to communicate and to indicate relationship. These two main purposes for nomenclature. Which are the two types of name given to organism? Yes, there are two types of names given to organism. First one is vernacular name, also called as local name or common name. Second one is scientific name. Which name create confusion? Yes, vernacular name create confusion because the name given to organism particular area different on the basis of their language, so create confusion. ICNAFP stand for, yes, International Code of Nomenclature for algae, fungi, plants. International Code of Nomenclature for algae, fungi, plant. Which book introduced term binomial system of nomenclature by Carl Linnaeus? Yes, Species Planctrum is a book binomial system nomenclature term introduce. Up to this, we seen here number of questions noted on the basis of today's lecture. Hope that you understood everything.